Okay. So, last class में टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ ओडिशा का कंप्लीट करथिलु ओके मेंस क्रैश कोर्स रे तो आउ तापर आपनको राजेश सर आई थिंक आज आपनको लास्ट क्लास रहइबो इकोनॉमिक्स रो ठीक है तो इकोनॉमिक्स आउ टेम्पल आर्किटेक्चर ए दिटा सब मॉड्यूल आपनको कंप्लीट हैला तापर थर्सडे रु आपनको एथिक्स स्टार्ट हे जो छटर वर्डटा आउ मु गोटे गोटे चैप्टर एबे डायनास्टिक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा से पार्ट को हमें कवर करबा जति कि हम सिलेबस रे अछि सेति कि मेंस में जोटा इंटीग्रेटेड बैच रे जेंति तार डिटेल क्लास होछि कि हम अलग डायमेंशन जेंति कि ओडिशा विषय हम एते पढु जो हम स्टार्ट करछु कोन ओडिशा रो विभिन्न जो आपनकर ओके ना सब थिला ओड्र उत्कल कलिंग ओके देन पोंगड़ा आमे बहुत एगुडा सब सेम ओके बट एटा मेंस में दरकार नहीं एटा ठीक अछि मेंस रे जा पढु हमर तीनटी क्वेश्चन अछि कलिंग वार ऊपर से तीनटी क्वेश्चन आपन को भलो रे पढिबार अछि तार पॉइंट्स आपन को ओके नोट्स रे लिखबार अछि बुझि परले सो हमको पढ़िथिलु आर्किटेक्चर टेम्पल आर्किटेक्चर से थरे जदी कार कुछ इश्यूज अछि प्रॉब्लम अछि ताले मते पचरंतु अदरवाइज टुडे वी विल सी थ्री क्वेश्चंस तीनटा क्वेश्चन हमें देखिबा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपन को पई मो सेटा प्रोजेक्ट कर दोची तो अपन माने से थ्रू फॉलो कर परिबे आफ्टर द क्लास अपन को ऐप रे एटा अपन पाइ जेबे जोटी वीडियोस अछि से वीडियोस पर ही अपन को एटा मिल जेबो ओके ओनली थ्री क्वेश्चंस कलिंग ओवर आउट रे रिपीट भी हेछि बहुत तरह क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बहुत तरह पढिछु राइट सो okay online students so okay so ଆପଣଙ୍କର I hope all of you are able to see okay online students जते अछंती आपण okay देखि पाउछंती so तीनटी क्वेश्चन इंपोर्टेंट अछि कलिंग वर्क फर्स्ट क्वेश्चन हला आपनकर जे देइछि डायरेक्टली सिलेबस रे causes and impact or effects of Kalinga war ठीक है तार causes का आउ तार इफेक्ट का इम्पैक्ट का कॉन्सिक्वेंस का जहाँ पे अपन कह पाबे तो causes की रीजंस सेटा गोटे क्वेश्चन इम्पैक्ट की इफेक्ट सेटा गोटे क्वेश्चन आउ थर्ड हैला एडमिनिस्ट्रेशन चेंज इन एडमिनिस्ट्रेशन और इम्पैक्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ओके आफ्टर कलिंग वार ओके अशोकंकर कोन पॉलिसी थिला एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड एई तीनटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपनकर रहबा तो प्रथम क्वेश्चन के आगे आसन ओके कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज द causes of the Kalinga war देखो तो क्वेश्चन टा कोन देछि क्रिटिकली एनालाइज द मल्टीफैसेटेड पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल फैक्टर्स दैट culminated in the outbreak of the Kalinga war ओके तो तीनटा एस्पेक्ट्स अपन को एथरे देखिबार अछि ओके
all the three aspects you have to write. अलगा भी किसी other aspects भी जो भी होची other reasons होची Kalinga war रो सेटा आपण लिखि परिबे. तो एगुडा माइंड रे रखिबे कि आपण कांसेप्ट ता जानंतु किंतु लिखिबे सेठी बहुत कम वर्ड्स रे राइट 150 की 200 वर्ड्स रे किंबा जो फॉर्मेट एठी फॉलो होची 250 और 300 वर्ड लास्ट ईयर जदी हम देखिबे ठीक अछि 150 की 250 words GS paper रे जो 10 मार्क और 15 मार्क क्वेश्चन ओके ओ कोडा सेतरे डेविएशन होची जेंति की आपनकर ऑप्शनल रे पचाउचंती 250 words 15 मार्क पई आउ 300 words 20 मार्क पई ठीक अछि. So from the question 1 तो एटा सिंपली कहया बोले ए जो क्वेश्चन टा एटा बेसिकली है ना डिस्कस द causes or reasons for the Kalinga war. See, some are different aspects for each. Okay, political, economical, cultural. So, go to 1 to 2 lines, depending on the word question, 10 mark or 15 mark. The 10 mark question, I will try to one maximum 1 line. Okay, introduction देबे और 10 मार्क क्वेश्चन जदी 4 लाइन रो इंट्रोडक्शन रहिबो तब तो टाइम आपन को केबे हबन हैला तेनु आउ जदी 15 मार्क रो क्वेश्चन अछि ठीक अछि 2 लाइन रो इंट्रोडक्शन देई परिबे. ओके एटा यू गो थ्रू द इंट्रोडक्शन एंड ऑल मु तारा मेन पर तो 2 लाइन रो इंट्रोडक्शन देबे कि मल्टीपल फैक्टर्स आर रिस्पांसिबल फॉर द Kalinga war एमति तो नो कि गोटे फैक्टर पई दिला ओके आउ कोन कोन से फैक्टर्स थिला तापर आपण डिस्क्राइब करिवे ईच पॉइंट रो गोटे लाइन रो एक्सप्लेनेशन दे परिवे कि जदि समय नाही आपण पास 7-8 पॉइंट अछि ताले जस्ट खाली हेडिंग्स देखिए छाड़िया पे पड़िबो ठीक अछि बट आइडियली यू शुड राइट एट लीस्ट 1 लाइन पूरा स्केची आंसर कर देले आपण पॉइंट्स भलो थिबो किंतु मार्क एते भलो न आसी पारे तो बेस्ट जिंस हला आपण पॉइंट ता किंबा सब पॉइंट ता देला परे मिनिमम गोटे लाइन ता ऊपर लिखि देले ठीक अछि. सो कम टू दिस तो प्रथमे आसिला आपनकर पॉलिटिकल फैक्टर्स ठीक अछि. So political factors रे दीटा आपनकर important right देखि so you can see here in the political factors first hela strategic threat to a powerful neighbor. तो मगधर प्रथम रो ये प्रॉब्लम ता थिला कि due to the location of Kalinga से माने चाहते केमिति कोन आंकर स्पेशली मैरीटाइम रिसोर्सेस ओके आमे केमिति यूज करि पारिबा काहे कि ना मगधन नेवी जोटा थिला सेटा बेसिकली गोटे रिवराइन नेवी थिला कारण मगधर तो तार कोस्टल एरिया नथिला ना सी संगरे तार किछि लिंक नथिला तेनु तांकर नेवी थिला मगधन नेवी थिला जोटा कि इवन बिफोर द मौर्यस they had riverine navies okay मौर्यस माने ताकर रिवराइन नेवी जोटा थिला तार मेन काम कोन थिला ना रिवर रे जो ट्रेड होची ओके तार टैक्स कलेक्शन करिका सेटा से माने ओके ताकर मेन एम सेटा थिला ठीक अछि. तेणु ऑब्वियसली से मान जदी ताको ट्रेड बढ़ेबार थिला ताले ताको जदी गोटे सी किंबा ओशन को लागि कि एरिया मिली जिवो ताल ताको सुविधा हो तेणु कलिंगर सी जो बड़ गोटे एडवांटेज थिला आउ सेज पे कलिंगर ट्रेड भी बहुत भलो थिला बहुत गुडे जाय अब जोडा हमर जेंति कल्चरली हम जोडा बाली यात्रा आज पर्यंत बनौछु ओके सेलिब्रेट करछु त राइट. सो सेटा हला अपन फर्स्ट रीजन स्ट्रेटेजिक थ्रेट as a powerful neighbor. So economically it was powerful, even militarily also it was powerful. Okay, may not be as powerful as Magadha, but still it was not a pushover. ठीक है, এটা হলা number 1. Second হলা Ashoka's imperialistic okay aims goals अपन जाबी कहि परिए साम्राज्यवादी थिले आउरी एक्सपेंशन केमती करिवे से ठीक है. और गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिंस थिला सदर्न एक्सपेंशन बिकॉज कलिंग वाज अ बफर स्टेट मगध आउ दक्षिण पट ओके यू नो इन एंशिएंट इंडिया you had divided the country into 3 parts. North India को अपन कहउथिले आर्यव्रत जोठी कि आर्यंस माने से माने रहउथिले तो से नारे तार पड़ी गला आर्यव्रत तापर जो मिडिल इंडिया आसला सेंट्रल इंडिया ताको अपन ओके मध्य देश बोली कहले ठीक अछि.
आउ जो साउथ ऑफ इंडिया टाको आपण दक्षिण पट बोली कहले तो से दक्षिण पट को जीवा पई ओके दिस वाज अ बफर कलिंग वाज अ बफर तेनु ये जदी कलिंग को जीति गले ताहले डायरेक्टली से माने सदर्न स्टेट्स को ओके एक्सेस आसीजिबो मगधर तेनु सेटा भी गोटे मेजर रीजन थिला सो दिस वाज बेसिकली योर political reasons okay political factors तापरे देखो आपन को पाखरे आउरी भी बहुत गुडे रीजन थाई पारे कि पॉइंट्स थाई पारे कथाटा हला हमकु इधर जदी 10 मार्क रो क्वेश्चन पड़ी थी 7 मिनिट रे आपन को सारिया पई पड़िबो ठीक अछि यू हैव टू कंप्लीट इट इन 7 मिनिट्स तो लगी बहुत डिफिकल्ट आपन जदी बहुत गुडे जिंस लिखिबे तो जति की दरकार सेति की लिखिबे आ जदी 15 मार्क क्वेश्चन पड़ला ताले 11 मिनिट आपन को मिलिबो तो एटा एबे टू माइंड रे रखि दिंतु जते बोले देखु छथि आ मो 20 मिनिट गोटे आंसर लिखि की प्रैक्टिस करबी स्पेशली जो माने मेंस बैच पिला प्रीलिम्स देई चल जो माने एबे जॉइन करचंदी 2024 बैच पे हां ठीक अछि आपण एबे टिके वर्ड लिमिट न केयर करले चलिबो काहे ना आपण प्रथम थर लिखुछंदी किंतु जो माने एथर को देबे मेंस एग्जाम धरंतु मार्च के अप्रैल जेबे हबो ओके तो आपण को एबे टू पैटर्न रे लिखिबारो ओके यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि मु 150 वर्ड्स 7 मिनिट्स से लिखिबे 250 वर्ड्स 11 मिनिट्स से लिखिबे सेटा आपण को माइंडसेट रहइबा दरकार नले आपण जानि थिबे किंतु लिखि परिबेनी ओके सेटा बहुत खराब लागियो कि मु जानथिली किंतु छाडी के आसी ओके एनीवे तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को आसों तो फर्स्ट हला वेल्थ एंड मैरिटाइम डोमिनेंस ऑफ कलिंग कलिंग रो वेल्थ हाउ मैरिटाइम डोमिनेंस ठीक अछि तो एथरे कोन होची बेसिकली ना गोटे तो मैरिटाइम कथाटा कहली ताकर नेवीज थिले बट ताको पाखरे ओके दे डिड नॉट हैव मगध डिड नॉट हैव ए सी कोस्ट ओके तो ओशन भी सी सागर कनेक्शन नथिला कलिंग को जदी जितिबे अच्छा पाखा पाखी सब कलिंग हिथिला कहीं ना सेपट वेस्टर्न कोस्ट को जीवा पाई गुजरात आड़ को तो बहुत टाइम लगिबो ठीक अछि कलिंग को बाईपास करले सो सदर्न डायनेस्टी स्टार्ट हो जाउछन ठीक अछि ताले सबुटु ताको पई सुविधा हो कलिंग ठीक अछि so that was one of the main reasons why they wanted to okay conquer kalinga तारा maritime resources ताको मिलिबो trade routes आउरी better खुली जीवा ताको पई okay they will be more prosperous और एंशिएंट इंडिया रे अपन देखि जंती कोन ना जो जनपद महाजनपद थिले 16 टा ता भितरु सबुठु पावरफुल महाजनपद भितरे सबुठु नंबर 1 ये थिले ओके के मगध कोन भाई ताका आयरन बहुत थिला ठीक अछि आउ भी केतेटा सेंती महाजनपद थिले जांगर आयरन टिके थिला ओके तो ताका संगे दे वर द मेन कॉम्पिटिटर्स बट मगध द रिसोर्सेस तार स्ट्रेटेजिक लोकेशन तार डायनेस्टीज पई मगध बिकेम द सीट of power in ancient India, at least in the earlier parts of ancient India. तापरे जेतोले आस्ते आस्ते उज्जैन and other places to political power का shift हला बुझि पाले so anyway first wealth and maritime dominance of Kalinga. Second हला commercial rivalry and strategic trade routes. तो बहुत गुडे trade routes ओके कलिंग देकी जाउतला एंड से ट्रेड रूट्स एमती सब इनलैंड रूट्स भी नथिला माने रोड ऊपर ही सब थिबो नै तो कोडी सरू थिबो पुनी सी रूट थिबो ओके तेनु दे जो मैरीटाइम एस्पेक्ट बहुत ही इंपोर्टेंट थिला इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पई से माने जॉइन करिया पई ओके किंबा कया पे गले कलिंग को एनेक्स करिया पे चाहते इनिशियल एम्परर्स माने ता ऊपर एते ध्यान देई नथिले बट अशोकंकर मेजर रीजंस ओके इकोनॉमिक रीजंस ए आथिला तनो आपण देखिले कोन पॉलिटिकल रीजंस देखिले इकोनॉमिक रीजंस देखिले ठीक अछि तापर आसंदु कल्चरल एंड पर्सनल फैक्टर्स ठीक अछि तो प्रथम स्टीलिंग ऑफ अशोकस ज्वेल्स दिस वाज ए पर्सनल फैक्टर एंड बहुत गुडे सोर्सेस आ विषय रे नाही एटा कोठो हमको मिलुची किछटा टिबेटियन सोर्सेस तो मिलुची
मेनली जड़े टिबेटन मॉन्क थिले लामा तारानाथ ओके तो लामा तारानाथ ए जिनसटा लिखि जंदे आपको पूरा डिटेल्स लिखिया दरकार नहीं लामा तारानाथ बोली टिबेटन सोर्स आपण लिखि देई परिबे बट स्टिल देन इफ यू वांट ओके यू कैन जस्ट keep in mind a Tibetan account this is basically is talking about Lama Taranath. Okay, तो कलिंगर सी बेसिकली कहिथिले कोन कि नागस माने नागा ट्राइब से माने ताको ज्वेलरीज नहीं गले ओके ऑर्नामेंट्स नहीं गले जोटा अशोक को बहुत क्लोज थिला तो अशोक को राग थिला एंड देन ही आइडेंटिफाइड दैट दीस नागा ट्राइब्स बेसिकली वेयर फ्रॉम कलिंगा चेतनी से राग रखी कलिंग ऊपर अटैक कले बट एटा अलग हिस्टोरियंस माने सिंपली इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करनांती सो दिस इज वन ऑफ द you can say the proposals okay or one of the opinion of one of the historians who was a monk a Tibetan monk Buddhist monk je thile ठीक है लामा तारानाथ तापरे लेजेंड ऑफ कारुवकी तो एटा से जो फिल्म का भी आस्तिला अशोक का बहुत कंट्रोवर्सी हेतिला सो इट वाज जनरली कंसीडर्ड दैट दिस कारुवकी वाज ए प्रिंसेस और ए डॉटर ऑफ वन ऑफ द रूलर्स ऑफ कलिंगा तो अशोक वाज से ताको देखिगी ताको बाहा पे ताको इकाला ओके और से वीडियोटा सेट नहीं करले सो दिस इज सेट से प्रथम दे दी लेजेंड okay so it is in the folklore it actually historical evidence are basic kichi nahi kintu historical evidence re eya asuchi in some inscriptions we find that there was a queen of Ashoka jahan ka na Karuwaki thila buji parle so these are some of the things you have to keep in mind ठीक अछि so eta hela apanakara second point eta gala culture and personal factors so second point then asila religious factors so this is quite contested religious conflict and Ashoka's devotion okay so gote jinsa thila ki it is generally believed that Ashoka became a Buddhist after the Kalinga war abasya ebekar jo historical evidence baharuchi सेटा ताको नेगेट करूची ओके रिसेंट हिस्टोरिकल एविडेंस ता माने से आगुरु ही बुद्धिज्म जॉइन करि सारी थिले ओके बट देयर आर लॉट ऑफ रिकॉर्ड्स व्हिच से दैट व्हेन ही वाज द गवर्नर ऑफ उज्जैन सेतबले ओके सी बेसिकली शिविज्म मानुथिले ब्राह्मणिज्म मानुथिले ओके शिविज्म ही वाज शिव भक्त गोटे पर्टिकुलर इंस्क्रिप्शन रे गोटे बॉडी से दोथिले एज ए गवर्नर ओके ऑफ उज्जैन से बॉडी जेतले देले तो he you know offered that body to Lord Shiva ठीक अछि पशुपति को ताको ऑफर कले so सेतुर जणा पड़ते कि maybe he was a Shivite but at least he was not a Buddhist at that time ठीक अछि but later on after the Kalinga war and coming under the influence of some Buddhist monks से Buddhism को आस्ते आस्ते he first joined as a okay upasaka माने lay disciple तापरे भिक्षु हेले तापरे okay he in the sense that he became he you know adopted Buddhism as his religion ठीक है किंतु बहुत गुडे recent historical evidence speak कि से प्रथमरो before the war also he was a Buddhist okay हमें से contemporary historical debate से possible हमारा जहाँ established होती कि बात टेक्स्ट बुक में लिखा है कि that we have to write so हमें यह माने कि चलूँ कि सी आगुरु okay he was basically a Shivite and after this he converted into Buddhism ठीक है he converted into Buddhism that is the thing you have to write so religious conflict and Ashoka's devotion. Before the war, Ashoka adhered to Shaivism, while Kalinga was thought to be influenced by Buddhism. See, before the basically the Somavamsis, okay, जो हमें dynastical history of Odisha रे यदि पढ़िबा, even till the Bhaumakaras, Bhaumas were basically कौन Buddhist थिले से मेरे महायान Buddhist थिले. तो से पर्यंत कलिंग रे एई पार्ट रे basically Buddhism was the predominant religion, even Jainism Kharavalankar time to out tapare so the Brahminical religion thila jota ki ame ebe Hinduism कहउछु सेटा एते strong नथिला एठी
ओके सेटा तो सोमवंशीस माने आसिले से माने वैदिक यू नो कोन rulers थे ओके they believed in the Vedas, they believed in the chaturvarna concept and all तो सी कोन बोले सोमवंशीस गरिका से माने वाराणसी रु बहुत गुडे नॉर्थ इंडियन ब्राह्मण्स को आनले ओके आउ एठी सेटल कर दे बाय गिविंग देम लैंड ग्रांट्स पूरी साइड रे आउरी केते जगह रे भी आपण देखुचंती कोन ना शासन वरिका थाए ओके शासन गां सो बेसिकली दे फॉर एजुकेशन एंड स्प्रेडिंग ऑफ वैदिक ओके एजुकेशन एंड वैदिक प्रिंसिपल्स ताको से बहुत गुडे लैंड ग्रांट्स ते माने देथिले सोमवंशीस माने तापरे पुनी आगु ओल्गा डायनेस्टी माने गंगस माने आसिले सो दे वर आल्सो से माने भी ब्राह्मणिकल रिलीजन को ओके सब्सक्राइब करथिले मेनली वैष्णविज्म को ओके शिवाइट्स भी थिले ताको तो सेही टाइम को सोमवंशीस को टाइम को ओडिसा रे आपण कहि परिबे लूजली हमें जोडा ओडिसा कहूछु ओडिसा रे आपणकर okay there was this brahminical religion or Hinduism but before that it was in the Bhaumakaras it was basically Buddhism and before them also it was Jainism कुछ बोले तो एटा जो से पॉइंट ता कहूची कि जेतु कलिंग बुद्धिस्ट थिला तो ये अटैक करले बिकॉज़ ही वाज अ शिवाइट ओके बट तार हिस्टोरिकल प्रूफ बेसी आपण पाखरे नाही ओके so these are the various factors जोटा आपण लिखि परिबे इतरे क्वेश्चन रे जा क्वेश्चन टा टिके कॉम्प्लिकेटेड करि के देछि बट एटा मन रखिबे कि क्वेश्चन टा आपनकर ओके सिंपलीफाई कर देले व्हाट आर द कॉजेस ऑफ और व्हाट आर द रीजंस ऑफ कलिंगा वार बोली आपण कहि परिबे Okay, as I told you, only 3 important questions are there in this chapter. 8 gala good take question. This is the first question. Any doubts in this? Then you can ask. So doubts over किचने. These are all factual things. Concept का बुझी कि अपन खाली points अपन को ठीक है mind रे रखिया पड़ी. Okay. So अपन निजर notes बनेबे just take down the points. कहीं ना concept अपन जान करती अपन सुधा लिखी परिबे. But explanation टा अपन निजे लिखिबे पॉइंट टा आइदर गोसिबे कि अपन प्रैक्टिस करि कि सेटा मन रखिबे ओके एटा हला क्वेश्चन 1 सेकंड क्वेश्चन अब तो सेमती 2 लाइन रो 3 लाइन रो कंक्लूजन अपन देबे ओके नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपन को आसिला द कॉन्सिक्वेंस और द इंपैक्ट ओके ऑफ द कलिंगा वार एबे कलिंगा वार रो इंपैक्ट जदि हमने देखिबा बहुत टाइप रो इंपैक्ट सारा हिच तो सिंपलीफाई जदि कर देबे क्वेश्चन टा को डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कलिंगा वार हला कोन क्वेश्चन देछि देखंतु क्रिटिकली इवैल्यूएट द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल social and cultural ramifications माने okay consequences ठीक है impact of the Kalinga war which with a focus on its transformative impact okay तो कौन चेंज है ट्रांसफॉर्म कौन है ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑन अशोका's reign and Indian history दीटा आंसर ताको अशोक जो चंड अशोक रु धर्म अशोक ताकर ट्रांसफॉर्मेशन हैला सेटा प्लस से गोटे पैन इंडियन पर्सपेक्टिव भी पचाउछ ओके तो सब जिंस हमहु माइंड रे रखिया कि सिंपली कहले एटा हैला क्वेश्चन हैला what is the impact or what are the consequences of the Kalinga war okay एतरे भी सेमती 2 लाइन रो इंट्रोडक्शन देबे एई लाइन टा एई फ्रेज टा मु अंडरलाइन करिया पे कहूची कलिंगा वार ऊपर कोन भी क्वेश्चन पड़ले किबा हम एते एसे क्लास करबा पे एसे करिका हम लिखिबा एटा इंपोर्टेंट गोटे एग्जांपल हमें दे परिबे सो प्लीज टेक डाउन एटा अंडरलाइन कर दियंतु अछि तो आपन को पाखे पीडीएफ टा बट स्टिल देन अंडरलाइन एंड राइट इन योर पर्सनल नोट इज मस्ट मींस जो माने दोचंदी पर्सनल नोट्स निहाती आपण करिबा कथा एबे जदी कम टाइम अछि जो 8टी बही आपण को प्रिंटेड मटेरियल दिया हबो सेटा कोई नोट भीतर भाबे देबे बट जो पार्टडा मु कहूछ कि आपण लिखि दियंतु सेतरा इंपोर्टेंट पार्ट्स रा अछि कांसेप्ट रा अछि सेते कहूछ देबे लिखिया पे सो अंडरलाइन दिस ओके द डुअलिटी ऑफ द वार कौन डुअलिटी ऑफ कलिंगा वार डिस्ट्रक्शन एंड एनलाइटनमेंट
हैला एटा लिखि दियंतु डुअलिटी ऑफ कलिंग war destruction बहुत लोगों डेथ है मैम गले गोड़ कटि गला हाथ कटि गला सेटा डिस्ट्रक्शन रे गला एंड एनलाइटनमेंट ओके सो एज ए रिजल्ट ऑफ इट बहुत भलो हैला वर्ल्ड रो भलो हैला बुद्धिज्म स्प्रेड हैला राइट कलिंग रो भलो हैला बहुत भलो एडमिनिस्ट्रेशन अशोक देले ता पर ओके so that part you have to write तो सेटा टिके अंडरलाइन कर दियंतु duality of consequences भलो consequence भी हैला खराब consequence भी हैला बुझि परले तो प्रथमे आपण आसंतु शॉर्ट टर्म consequences को तो फर्स्ट हैला मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड सफरिंग तो जोडा आपनकर मेजर रॉक एडिक्ट से लिखाई थी केते जनकर डेथ हैला कोन हैला सेटा भी एठी से लिखि नांदी ओके वेयर इज दैट 13th रॉक एडिक्ट ठीक है पाकिस्तान बॉर्डर पाखा भी सेठी लिखाई छी ओके कि एति लोकंकर डेथ हे गला एति लोक इंजर्ड हे गले ओके यू कैन सी दैट 1 lakh deaths 1,50,000 prisoners and countless injuries ओके आउ सेटा बहुत जण भी एमती स्पेशली जो इंडिक हिस्टोरियंस माने से माने कोहंती कि एडा बहुत अतिरंजित करी कि एग्जैजरेट करी कि लिखाई छी काई कि जदि लेखा जदि सेठी सेमती आपण ठीक रे लिखु थांते ताले आपण सेटा ओडिसा रे काई कि से रॉक एडिक्ट रखलिन ओडिसा रे दीटा मेजर रॉक एडिक्ट आपण को अछि गोटे धौली रे अछि शांति स्तूप सेठी गोटे अछि आ गोटे गंजाम रो जौगड़ रे अछि ओके बट सेथरे वार विषय रे किछ लिखाई नि सेथरे पीस हाउ ही इज ए बेनेवोलेंट रूलर हाउ ही इज ए पेरेंट हाउ ही इज ए फादरली फिगर टू द सब्जेक्ट्स ऑफ कलिंग टू द पीपल ऑफ कलिंग से गोडा सब लिखाई छि धर्म ऊपर लिखाई कोन कोन करिया कथा कोन भलो सब जोटा कि पेरेंट्स को भलो बिहेव करिवो एई टाइप रो जिंस लिखाई छि ओके but he has not written anything related to the war सेटा लिखले कोठी इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान सेपट बॉर्डर रे ओके 13th रॉकेट डिक्री तो बहुत जन हिस्टोरियंस एथने कोन तो एठी लिखथान आउ कि जन हिस्टोरियन जो माने काउंटर करिया भाई से माने कोन कि नहीं सेटा जदी से लिखितांते कि उडा बिने विलेन जे देखथांते तार सब से आही माने पड़थांते ये लक्ष लोग मार दी राइट ही डिड नॉट वांट टू बी रिमेंबर्ड इन दैट वे तेनु से बहुत दूर रे ताको लिखिले बुझि परले so anyway 1 lakh deaths 1,50,000 injuries okay prisoners and lot of injuries right तापरे war सॉरी गला परे भी there was lot of war related issues diseases and other issues were there ठीक है so it is said to be history's one of history's bloodiest conflicts even आमे जो कहू कि से दया नदी जोटा अछि सेटा भी पूरा रक्त रे रेड हे जाथिला राइट Second है annexation of Kalinga, short term consequences. So Kalinga जोटा से पर्यंत independent थिला, that was annexed into the Magadhan Empire. तांकर भी सेटा एम थिला, okay, expansion करिया पई. तो but से भी माने war रो इतने negative impact देखी, okay, he did not want that to happen. Okay, he wanted expansion, but not at that cost. So annexation of Kalinga. 5th province capital thila Toshali. Okay, underline कर दियंतु. Kalinga was the 5th province, okay, of the Mauryan Empire, and capital was Toshali. ठीक है. तो जो मेजर रॉक एडिक्ट्स कथा कहली गोटे धौली रे अछि ओके भुवनेश्वर पाखरे और गंजाम रे गोटे अछि जौगड़ ए दुटा हला मेजर रॉक एडिक्ट्स ठीक अछि तापरे सेई रॉक एडिक्ट से कोन लिखाई छी नथिंग अबाउट द वॉर व्हाट ही डिड हाउ ही इज ए फादरली फिगर अशोक से एडमिनिस्ट्रेशन ताकर केमती कोन रखिले सेई जिंसोरा लिखि जन ओके तापरे एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन So eti dharma mamatras, rajukas and other important officials, okay, तांको appoint कले अशोक. गोटे major difference हला तांकर बाकी जो चारटा province थिला, से provinces रे, okay, से माने governors थिले. और से governors माने decide करथिले dharma mamatras, rajukas and all these officials, state level officials से माने decide करथिले. But ओडिशा केस रे कलिंगा केस रे कोन हैला ना अशोक हिमसेल्फ ओके डिसाइडेड कि कोन से निजे हैंड पिक करथिले ता माने से निजे देखुथिले कि गोटे भलो लोक एठी जेंती पड़ो
एटिकार एडमिनिस्ट्रेशन से पर्सनली देखुले बिकॉज मे बी ऑफ द फीलिंग ऑफ गिल्ट एंड रिमोर्स एते लोगों को मार देली एबे मु ताकर वेलफेयर करिवि ठीक अछि ताकर कांसेप्ट से थिला राइट सो एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन इट आला शॉर्ट टर्म वाला देन लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस कोन हला आपन तो एडमिनिस्ट्रेशन ओके बेटर हला कलिंग आउरी प्रॉस्परस हला सो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अशोकस गवर्नेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम चंडाशोक टू धर्माशोक सेटा अपन लिख परिबे देन पैटर्नलिस्टिक गवर्नेंस मींस पैटर्नल माने कोन फादर तो फादरली फिगर ही वाज लाइक ए फादर टू हिज सब्जेक्ट ही वाज नॉट ए ग्रेट एम्परर और ए किंग ताकर इंटेंशन या थिला कि मो पई माने मो एते एठी डिस्ट्रक्शन करची सो आई विल ट्रीट देम ओके एज माय चिल्ड्रन माय सब्जेक्ट्स विल बी माय चिल्ड्रन मो फैमिली बोले समान रहे तो से हिसाब रे ओके बहुत केयर नहीं जा एग्जांपल मो गोटे देली कि कलिंग रे जेते ऑफिशियल्स अपॉइंटेड हेले सब ये निजे करथिले ठीक अछि पर्सनली अशोक सेटा देखुथिले सो सेटा गला आपनकर लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल रेमिफिकेशन तापर नेक्स्ट अपन देखिबे सोशल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस ओके सोसाइटी और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू रु कोन चेंजेस आपनकर हला फर्स्ट है एक्सेप्टेंस एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म जोटा कि ओल्ड स्कूल थॉट थिला ही वाज बेसिकली ए नॉन बुद्धिस्ट बिफोर द वॉर आफ्टर द वॉर स्लोली ही बिकेम ए बुद्धिस्ट एमती नो कि वॉर सरला बुद्धिस्ट गले ठीक अछि ही हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस जोटा कि से ताकर जे गुरु सब थिले बुद्धिस्ट मॉन्क्स को संगरे कथार्ता कले ओके once he was satisfied se sange sange tapare puni buddhist gale ni se lay disciple hele upasaka hele for a very brief period of time he was also a bhikshu or a monk okay then one of his gurus said that you are a samrat okay to tume monk hei paribani tume dekho monks kar lifestyle kemti kono but you will be a okay emperor ठीक अछि सो सीता परे एम्परर रहिले किंतु बुद्धिज्म रा प्रिंसिपल्स फॉलो करले ठीक अछि तो सेटा हला आपनकर एक्सेप्टेंस एंड प्रमोशन ऑफ बुद्धिज्म सो ही प्रमोटेड बुद्धिज्म ओके जैनिज्म बुद्धिज्म एमार एगुडा सब कोन मिशनरी रिलीजन्स सेम विथ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आल्सो बट सेगुडा तो इंडिक रिलीजन्स नो इंडिक रिलीजन्स भितरे ए दीटा रिलीजन आपनकर कोन दीज वर बेसिकली योर मिशनरी रिलीजन्स ता अर्थ हला किछटा डेडिकेटेड लोक थांती जो माने रिलीजन को स्प्रेड करंती दे आर द मिशनरीज ऑफ दैट रिलीजन ओके compared to that you will never find anything in Hinduism in that way जोटा कि ब्राह्मणिकल रिलीजन वैदिक रिलीजन को आवे कार आपन को केबे मिलिवनी कि के लोको के राजा लोकों को पठेथिबे प्रीस्ट मान को पठेथिबे जाओ तुमे हिंदुइज्म स्प्रेड करो ठीक है you will never find that in history rather what happened was the kings used to go to different places okay सेमाने ताकर सेठी जेमति कि मु कहली सोमवंशिष्ठ कथा सोमवंशिष्ठ आसीबा आगुरु एठी कलिंग रे बुद्धिज्म थिला ओके ताका आगुरु बहुमकरस माने रूल करथिले दे वर महायान बुद्धिस्ट but they were very tolerant okay कोडा बहुमकरस माने पढिबा मेट्रो डायनास्टिक हिस्ट्री से in fact ताकर जो सब बड़ बड़ राजा आ रानी माने भी थिले बहुमकरस कर जेमति त्रिभुवन महादेवी ओके सी निजे वैष्णवाइट थिले विष्णु पूजा करथिले से ओके से माने सब शिव का मंदिर भी बनैछंती विष्णु का मंदिर भी बनैछंती शक्त मंदिर माने जोटी शक्ति वर्शिप होची सही मंदिर भी बनैछंती ता भितर बहुत फेमस मंदिर हैला बैताल मंदिर ओके जोटी देवी चामुंडा को पूजा होतिला so that introduced your tantric buddhism to Odisha okay जोटा कि आपण कोन वज्रयान बुद्धिज्म कहउछन राइट ऑल्सो दे वर महायान बुद्धिस्ट को माने बहुमकर असन सो से पर्यंत ओडिसा रे प्रिडोमिनेंट रिलीजन जैनिज्म बुद्धिज्म थिला ए सोमवंशीस माने ओके बनारस अराउंड ब्राह्मण्स मान को आनी कि एठी सेटा ब्राह्मणिकल रिलीजन ता किबा वैदिक रिलीजन ता को स्प्रेड करले ठीक अछि So just like that, Ashoka also spread Buddhism even ताको भोजियों को भी से okay कोडी की श्रीलंका को सिलोन को पठेले right so spread of Buddhism okay
तापरे आउ कोन एडवांसमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर तो मौर्यन आर्ट जदि आपण देखिबे इवन लिटरेचर भी आपण देखिबे ओके तो सेथरे सेटा बुद्धिज्म को बहुत किंबा बुद्धिज्म द्वारा बहुत इन्फ्लुएंस हेतिला एज यू कैन सी दैट ओके जो लैंग्वेज से यूज करथिले बुद्धिज्म रो ओके गोटे बड़ा पॉपुलैरिटी रो रीजन हला कोन पाली लैंग्वेज यूज होतला जोटा कि कॉमन लोग इजीली बुझी परिबे ओके सो से पॉइंट टा भी आपण लिखि परिबे दैट इज एडवांसमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर मेनली द यूज ऑफ पाली व्हिच वाज इजी फॉर द ओके कॉमन पीपल टू रीड एंड अंडरस्टैंड तापर आसिला एथिकल एंड स्पिरिचुअल ramifications or consequences तादरे प्रमोशन ऑफ धर्म ओके सो धर्मर मेन प्रिंसिपल्स कोन एटा अंडरलाइन करंतु दिस इज इंपोर्टेंट एटा जो भी क्वेश्चन पडिबो अशोकम ऊपर यू कैन राइट कंपैशन हला टॉलरेंस हला एथिकल कंडक्ट हला ओके तो गोटे कोड ऑफ कंडक्ट टाइप रो रूल्स टाइप रो से माने जेंति कि पेरेंट्स को भलो बिहेवियर करिवो ओके लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर ओके का को मारिबोनी राइट इवन जो स्पाइस गरिका ताको जो धराबो ताका साइड केमति बिहेव कराबो ऑल दिस थिंग्स वर देयर सो दैट इज काइंड ऑफ अ कंडक्ट कंडक्ट रूल्स थोड़ा अपना कोई परिबो ओके नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू मोरल वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन ओके सो मोरल वैल्यूज एडमिनिस्ट्रेशन रे सेटा देखिया पई सो एडमिनिस्ट्रेशन इज फॉर द पीपल मोरल वैल्यूज सेथरे बहुत इंपोर्टेंट खाली कागज रे जा लिखाई कि रूल जा कि जदी से रूल टा भूल अछि लोगों को अगेंस्ट अछि ताले ताको चेंज करियार अछि सो एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम आल्सो ए स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू ताको देखिया पई धर्म मात्रस ओके आपनकर अपॉइंट हेले राइट आउ कलिंगर जेंते हम देखिलु एठी जो धर्म मात्रस अपॉइंट होतिले अशोक निजे ताको सिलेक्ट करथिले ठीक अछि सो दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ मोरल वैल्यूज इन एडमिनिस्ट्रेशन ठीक अछि अगेन टू लाइंस रो रेलेवेंट कंक्लूजन आपण लिखिबे ठीक जी एटा ला सेकंड क्वेश्चन ओनली जोटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम रे पढि परियो मु ताको ही डिस्कस करूची एज दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मेंस क्रैश कोर्स ठीक अछि लास्ट क्वेश्चन कलिंग वार रो हबो कोन ना अशोकंकर एडमिनिस्ट्रेशन रे चेंजेस कोन हला हाउ वाज अशोकस एडमिनिस्ट्रेशन इन कलिंग ठीक अछि दिस इज आल्सो ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सिंपल वे रे कहले ओके Ashoka's administration in Kalinga. And the question ta kon dechi critically analyze the administrative, social and moral strategies implemented by Ashoka in Kalinga following the war, highlighting their impact on governance, societal transformation and regional stability. The ta upare हमको लिखिया में पड़िबो ए क्वेश्चंस रो दीस आर पार्ट ऑफ योर टेस्ट सीरीज ओके जो माने क्रैश कोर्स से जॉइन करछन जो 40 टा टेस्ट अछि जेतेबेले से आपण कलिंगर से पार्ट रो आसीबो यू विल फाइंड दिस क्वेश्चंस वुड बी देयर तो से पार्ट रो माने ता भितरु एगुडा क्वेश्चंस अछि ओके सो अगेन 1 की 2 लाइन रो इंपोर्टेंट हम टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन ओके तापरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजीज एडमिनिस्ट्रेशन केमिति से चेंज वाले लोगों को पाई कौन सुविधा है those things you can see first asundu establishment of provincial government okay so एटा ताको फिफ्थ प्रोविंस थिला कलिंगटा कैपिटल हला तोशाली तो एठी गोटे गवर्नरेट से माने कॉलेज ठीक अछि सो वाइस रॉयल्टी इन तोशाली so following the annexation Ashoka designated Tosali which is current near Bhubaneswar as the provincial capital of Kalinga okay so and he appointed a royal prince as the viceroy ठीक है next appointment of dharma mamatras ठीक है so ethical principles moral values administration रे ताकू स्प्रेड करिया पे आपण को dharma mamatras से मन को रखा वाला नंबर 2 थर्ड है ना लीगल रिफॉर्म्स ओके एटा लेखन दुतार जो पर्टिकुलर वर्ड टा ओके दैट इज दंड समाहार और व्यवहार समाहार ठीक है दंड समाहार और व्यवहार समाहार काइंड ऑफ लीगल रिफॉर्म्स ओके तापर आसिला आपनकर सोशल स्ट्रेटजीज
So promotion of social welfare, infrastructure development, roads hela, public wells hela, ponds hela, water sources hela, gardens hela, parks hela, ei type ro dinso se public infrastructure, hospitals karika healthcare pai to public infrastructure upare okay bahut dhyan diya gala se time re. So promotion of social welfare. Tapare religious tolerance and integration. So he was Buddhist, but he started destroying okay the religious places of other religions. Okay, aguru non-Buddhist thile to setabale bi se Buddhism ro kichi destroy karna thile Kalinga re, Buddhist hela pore bi olga religions ro kichi se destroy karna. So he was religiously he was quite tolerant. Okay, tapare moral strategies. Okay, जहाँ जहाँ क्वेश्चन रे देइछि ताको अंडरलाइन कर देबे, डायरेक्टिव कीवर्ड अंडरलाइन करिकि जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट ताको अंडरलाइन कर देबे. सो मोरल एस्पेक्ट्स भी पछारथिला. सो मोरल स्ट्रेटजीज कोन फर्स्ट हला प्रोपगेशन ऑफ धर्म. सो जो थ्रू वेरियस एडिक्ट्स, पिलर एडिक्ट्स, रॉक एडिक्ट्स, ओके, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स से या सब देखेले कि you should follow the good conduct. Okay, which is good conduct rules se banai deythile, and everyone of his subjects of Kalinga are expected to okay agree and segura manibar tanko achi. Okay, the rules of good conduct dhamma ko samaste follow karibar achi, right? See, dhamma basically has गोटे तो है कि पाली रे धर्म को धमक, बट ये जो इंटेंशन रे कहउछन दिस इज नॉट रिलीजन, एटा गुड कंडक्ट को कुआ जाउछ. ओके, एथिकल कंडक्ट को कुआ जाउछ, राइट? तापरे पर्सनल एग्जांपल तो सी नीचे भी बहुत ट्रांसफॉर्म हो गले ताको बिहेवियर एंड ऑल, राइट? सो जोडा में कहउछु कंडा शो टू धर्म शो. एट द सेम टाइम आउ गोटे क्वेश्चन भी हेई पारे कि Ashoka, after Kalinga War and after embracing Buddhism, he became a kind of okay, pacifist. Our expansion colony, which is wrong. Okay, Kalinga tangara 5th province hela. It was not his last province. Se ao bhi kette province add kale, especially Dakshina Patare, south re, not by war but by persuasion. ठीक है, देखा मो इतने बड़ा आर्मी मोरा, ओके, मोरा इतने बड़ा किंगडम. So what I'm saying is you become my feudatory, मोरा vassal state है जो मते tribute दियो, तुम्हें तुम्हारे जा करे तो करो, मुझे वो attack करने की तुम्हारा internal matters से possible, but you will accept kind of my suzerainty. ओके, सब वर्ष मते एति कि तुम्हें रॉयल्टी दबो कि टैक्स दबो जा भी दबो. आ बहुत गुडे आपनकर सदन एम्पायर से राजी भी गले से केना अशोक संगरे वार करिबा वाज it was not a very prudent decision. किंतु ताकर एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर चलिना आफ्टर द कलिंगा वार आल्सो, बट नॉट थ्रू ओके द war and violence, but through reason, through talking, okay, through diplomacy. बुझिपारे सेटा आपनको लिखिबार अछि. In this personal example, the transformation of Ashoka. तापरे कोन impact on governance, social transformation and regional stability जो पत्ते थिला. ताकर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़िला, से जो धर्म मामद्रस हले किंबा जो राजूकस हले एंड द अदर ऑफिशियल्स जो मानकु अपॉइंट करा हला, से माने प्रॉपर्ली काम करले, से माने जानिले कि एम्परर निजे ओके पर्सनल इंटरेस्ट होछ दि कलिंगा रे. सो कलिंगा रे एडमिनिस्ट्रेशन बेटर हला, एठी जो फैसिलिटीज मिलुतले लोक सेटा आउरी बढ़िला. So Kalinga slowly became more prosperous. तापरे next point हला societal transformation. So society also changed because ये जो तगर promote कले okay tolerance, religious tolerance and non-violent जो Buddhism रो tenets उड़ा ताको से स्प्रेड कले तो लोकों को भी आस्ते आस्ते लोकों माने भी सेटा एक्सेप्ट कले. और देयर वाज अ सोसाइटल चेंज आल्सो. ठीक अछि, मोर अकोमोडेटिव और इंक्लूसिव सोसाइटी हला वायलेंस रो जोठी जगह नथिला. ओके, देन रीजनल स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रेशन.
तो सेटा गोटे बड़ इश्यू थिला कोन ना once Kalinga was okay annexed into the modern territory ताले नेक्स्ट तांकर बॉर्डर लागिला का संगे दक्षिण पट संगे साउथ संगे सो से पर्यंत कलिंग को नेगला कलिंग बफर स्टेट थिला ओके तो सब बेले तांको टेंशन थिला कि सी जदी बेसी कलिंग जदी बेसी स्ट्रांग होला हम ऊपर अटैक करिवो कोन करिवो नाउ इट वाज मोर और लेस ओके जेतु कलिंग मॉडर्न डायनेस्टी रे ऐड हे गला तेनु नेक्स्ट तांकर से माने कनकर करिवे साउथ को तो कलिंग रे भी गोटे स्टेबिलिटी आसी गला ठीक है so lot of development work was done at that time at the religious level cultural level okay economic level तो এই পার্টটা আপনাকে লিখিবার আছে ओके लॉन्ग टर्म पीस आपनको रहला कलिंग रे राइट so these are the three important questions जोगा कलिंग वार संगे रिलेटेड अछि এই তিনটা ओके सेमिति हमें और भी बहुत क्वेश्चन वेब पर जेंति को कहली कि 10 मार्क का क्वेश्चन आस परियो कि कलिंग वार परे अशोक तांकर एक्सटेंशन बंद कर देले व्हिच इज रॉन्ग ओके से बहुत एक्सटेंशन तापर भी करछंदी बट यस नॉट विथ यू नो योर फोर्स एंड वॉर but through diplomacy okay and peace बुझि परले so these three questions sufficient जहां भी हमरो पढिबो ता ऊपर सेटा सफिशिएंट रहबो आ आर्ट एंड कल्चर में पढि पारे ताको कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड कल्चर सेटा हमें जब हमें आर्ट एंड कल्चर के देखिबा ओके सो सेमिति आर्ट एंड कल्चर जब देखिले पैन इंडियन आउटलुक हमें दे परिबा और यदि कलिंगन कल्चर कलिंगन आर्ट एंड क्राफ्ट को कहबे देन आपण धौली स्तूप विषय लिखिबे ओके तापरे ताकर पिलर एडिक्स विषय लिखिबे ठीक है so those things you can he constructed lot of monasteries okay he gave patronage to already existing Buddhist institutions of learning ठीक है तो से सब दिन छोड़ा में लिखि पारे बट सेटा से हेरिटेज और कल्चर क्लास रे मु कहबी ओके कलिंगन हेरिटेज एंड कल्चर राइट any doubts in these three questions so सेटा ही आपनकर basically this would be sufficient for your okay exam परीक्षा पई एति कि आपनकर ए तीनटा क्वेश्चन आपनकर sufficient हबो okay so just to repeat आपनकर आजि राति रे ए क्लास परे इकोनॉमिक्स विल बी कंप्लीटेड ठीक है क्रैश कोर्स रे ता परे आपनकर एथिक्स टा स्टार्ट हबो थर्सडे टू ठीक है तो थर्सडे टू एथिक्स टा स्टार्ट हबो and tomorrow I will be starting with the next part कोन ना डायनास्टिक हिस्ट्री ऑफ ओडिशा महामेघवान और खारवेल ठीक अछि खारवेल को विषय से भी सिंपली तीन चारटा क्वेश्चन ही अछि ईच चैप्टर रे इंपोर्टेंट तीन चारटा क्वेश्चन आंसर फॉर्म रे आपन को मिल जिवो सो गोटे क्लास पर जेंति आपनकर सिलेबस ता कंप्लीट हेई चलतिबो सही हिसाब रे सो दैट आपनकर एग्जाम रो एटलीस्ट मासे आगुरु आपन ओके आउ ता सहित जो टेस्ट रो चलति टेस्ट सीरीज रो ताको ता सहित देबे स्पेशली जो माने इथर को ओके मेंस लिखिबार भाबु जदी कि आपन चांसेस अछि इवन जदी आपन नेक्स्ट ईयर की ता परे पई प्रिपरेशन करछंदी यू कैन प्रैक्टिस राइटिंग ओके फाइन सो विल स्टॉप